Dragon's Dogma. 7th Gen गेमिंग का वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एंड अंडर अप्रिशिएटेड रोल प्लेइंग गेम जो मेरे दिल के काफ़ी नियर एंड डियर है एंड भला क्यों नहीं। ड्रैगन्स डॉगमा वन ऑफ द मोर यूनिक आरपीजीज में से एक है, एक डंजन्स एंड ड्रैगन्स इंस्पायर्ड वेस्टर्न स्टाइल एक्शन आरपीजी डेवलप्ड बाय ए जापानीज डेवलपर कैपकॉम, मेरे फेवरेट वीडियो गेम डेवलपर्स। कंपेयर टू अर्ली एंड मिड 2010s, कैपकॉम करंटली एक काफ़ी ग्रेट पोजीशन में है। Starting with Resident Evil 7 in 2017, almost all of recent Capcom games absolutely bangers हैं. From Monster Hunter World to my favorite Devil May Cry 5 to even Resident Evil 3 Remake, जो एक flawed but still great game है, and most recently critically acclaimed Resident Evil Village. So current Capcom एक complete powerhouse है जो both critically and commercially great state में है, and beloved by fans and gamers alike. They even announced upcoming projects like Village DLCs, Monster Hunter Sunbreak expansion, and most recently Street Fighter 6 and a brand new IP, Exo Primal, जो देखने में एक spiritual successor लग रहा है Dino Crisis का, Dino Crisis 2 be more specific because of the arcade gunplay. And knowing Capcom, मैं honestly surprised नहीं होऊंगा if इस game का development as an actual Dino Crisis start हुआ होगा. So they are firing on all the cylinders right now, जहाँ वो अपनी old and dormant IPs को revive कर रहे हैं like Devil May Cry and long-running franchises को evolve कर रहे हैं for modern audience like Resident Evil with recent mainline entries and Monster Hunter with World and Rise. With all of these games, मैं Capcom के upcoming projects के लिए काफ़ी excited हूँ because either मैं उनकी IPs में already invested हूँ like Devil May Cry, Monster Hunter and Resident Evil, और अदर IPs में इन्वेस्टेड होने में इंटरेस्टेड हूँ लाइक स्ट्रीट फाइटर, एस अटर्नी, ओनिमुशा, मेगा मैन एंड मैनी अदर कैपकॉम गेम्स. बट नॉट एवरी फ्रेंचाइज इज इक्वल. डिस्पाइट ऑल ऑफ द रिसेंट सक्सेस, देयर आर मैनी कैपकॉम IPs जो अभी भी डोरमेंट है लाइक डायनो क्राइसिस, डार्क स्टॉकर्स, ओनिमुशा एंड इवन द ब्लू बॉम्बर हिमसेल्फ जो वंस कैपकॉम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था. बट देयर इज़ वन कैपकॉम फ्रेंचाइज जिसके रिटर्न का मैं काफ़ी पेशेंस से इंतज़ार कर रहा हूँ एंड एज यू माइट हैव गेस्ड इट, वो फ्रेंचाइज है ड्रैगन्स डॉगमा, एक गेम जो वन ऑफ माई फेवरेट्स में से एक है. ड्रैगन्स डॉगमा हमेशा से काफ़ी यूनिक गेम रहा है विद इट्स कॉम्बैट, पॉन सिस्टम एंड अ डिफरेंट टेक ऑन हाई फैंटेसी जॉनरा जो स्टार्ट होता है विद योर स्टैंडर्ड फैंटेसी ट्रोप्स बट बाय द एंड ऑफ द गेम अपने आप को ह्यूज वेज में डिफ्रेंशिएट करने में सक्सेसफुल होता है. ऑल्सो ये गेम heavily inspired है by Berserk, something I find really cool. Also, please go and read Berserk if you already haven't. It's just amazing. Dragon's Dogma Capcom के लिए एक important IP है because back in 2012, Dragon's Dogma both a critical and commercial success था. Not as big as Resident Evil or Monster Hunter, but for a new IP, it did pretty well. And ever since then, Capcom ने गेम को multiple different platforms में रिलीज़ किया है like PC, 8th Gen consoles and most recently in 2019 on Nintendo Switch. Other than releases, Capcom ने many other ways में इस franchise को expand किया है like एक tactical strategy RPG, एक subpar anime adaptation and एक Japan exclusive MMORPG जो sadly 2019 में shut down कर दिया गया था. काश कैपकॉम ने ड्रैगन्स डॉगमा ऑनलाइन को जापान के बाहर रिलीज़ किया होता बिकॉज वो ईजिली एक ह्यूज सक्सेस हो सकता था एंड आई रियली वांट टू प्ले दैट गेम. विच मॉडल्स सम डे समहाउ डेडिकेटेड सर्वर्स के थ्रू इस गेम को रिवाइव कर पाएंगे विच दे आर ऑलरेडी ट्राइंग बट इट्स स्टिल नॉट फुली प्लेएबल. सो एवर सिंस इट्स इंसेप्शन, ड्रैगन्स डॉगमा कैपकॉम के लिए एक फेयरली एक्टिव प्रॉपर्टी रही है इवन इफ वो एक्टिवनेस मोस्टली सिर्फ ईस्ट एशिया तक ही कंटेंट थी. सो ये काफ़ी स्ट्रेंज है कि ऑलमोस्ट 10 years लेटर हमें अभी तक ड्रैगन्स डॉगमा एक प्रॉपर सीक्वल देखने को नहीं मिला. बट एवर सिंस 2020 हमें ड्रैगन्स डॉगमा 2 रिलेटेड मल्टीपल लीक्स देखने को मिली हैं एंड मैं इन लीक्स को डिस्कस करना चाहता था विद सम ग्रेन ऑफ सॉल्ट एंड सम स्पेकुलेशंस. Since May 2022, Dragon's Dogma की 10th anniversary है and we might just get an official announcement for Dragon's Dogma 2. But before talking about the leaks themselves, let's discuss कि क्यों हमें अभी तक Dragon's Dogma का एक proper sequel देखने को नहीं मिला. And इसका आंसर actually काफ़ी simple है. Hideaki Itsuno. Hideaki Itsuno, one of the more well-known Japanese developers में से एक है because of his work on Devil May Cry 3, 4 and most recently Devil May Cry 5. And ever since 2005 other than Devil May Cry series, Itsuno-san ने सिर्फ एक ही गेम डायरेक्ट किया है and that game is Dragon's Dogma, जो Itsuno-san का ड्रीम प्रोजेक्ट था.
सो ये मेरी तरफ से अ बिट ऑफ स्पेकुलेशन है, बट दिस इज़ द रीज़न कि क्यों हमें अभी तक ड्रैगन्स डॉगमा का एक प्रॉपर सीक्वल देखने को नहीं मिला है, बिकॉज इट इज़ इत्नो-सां's ड्रीम गेम एंड आई डोंट थिंक उनके अलावा किसी अदर डेवलपर को एक फुल फ्लैश सीक्वल पर वर्क करना चाहिए। एंड एवर सिंस ड्रैगन्स डॉगमा इत्नो-सान ने सिर्फ एक ही गेम पर एज अ डायरेक्टर वर्क किया है, डेविल मे क्राई 5, which started development around 2015 or 2016. But before that, Itsuno-san had to make a choice, develop Devil May Cry 5 or Dragon's Dogma 2. And उस वक्त उन्होंने Devil May Cry 5 को चूज़ किया, which makes sense since last mainline Devil May Cry game 2008 में रिलीज़ हुआ था. No, we don't count DMC. So because of Devil May Cry 5, I don't think Itsuno-san के पास इतना वक्त था कि वो another game को simultaneously plan and direct कर सके. बट एवर सिंस द रिलीज ऑफ DMC5, इत्नो-सान अपने न्यू प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं एंड हमें टाइम टू टाइम उस प्रोजेक्ट के बारे में सुनने को मिला है, जो मोस्ट लाइकली 2019 से एटलीस्ट प्लानिंग और प्री प्रोडक्शन स्टेजेस में था. It also makes sense considering the sudden shutdown of Dragon's Dogma Online, because the MMORPG team most likely got shifted to Dragon's Dogma 2. So if Dragon's Dogma 2 currently full development में है, then game की pre-production and planning around 2019 में start हुई होगी, and the full production in late 2019. And this is where the leaks come. So far हमें सेम 4chan यूज़र से Dragon's Dogma 2 पर मल्टीपल लीक्स देखने को मिली है एंड समथिंग कन्फर्म्ड बाय डस्ट कोलम, जो एक काफ़ी वेल नोन कैपकॉम एंड रेजिडेंट इविल लीकर है. मैंने सभी लीक्स में से मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है एंड हियर आर ऑल द लीक्स जो मुझे पर्सनली इंपॉर्टेंट लगी. बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट लीक्स. Capcom data breach which occurred in November 2020 and Nvidia GeForce Now leak happened in late 2021. सो द कैपकॉम लीक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हमें मैनी करंटली इन डेवलपमेंट गेम्स की लिस्ट देखने को मिली, लाइक रेजिडेंट इविल 4 रीमेक, मॉन्स्टर हंटर 6, स्ट्रीट फाइटर 6 जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, एंड मैनी अदर्स. वन ऑफ द लीड गेम्स इन दिस लिस्ट इज़ ऑफ कोर्स ड्रैगन्स डॉगमा 2, विच प्रीटी मच कन्फर्म्स कि ये गेम एक्टिव डेवलपमेंट में है और एटलीस्ट दैट इट एग्जिस्ट. हमारी सेकंड बिग लीक है एनवीडिया GeForce Now, जो गेम इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट लीक्स में से एक है, बिकॉज जस्ट हाउ मैनी अनअनाउंस्ड टाइटल्स गॉट लीक्ड एंड मैनी ऑफ दैम सो फॉर कन्फर्म एंड रिलीज भी हो चुके हैं, लाइक क्राइसिस 4, गॉड ऑफ वॉर PC, अनचार्टेड 4 PC, फाइनल फैंटेसी रीमेक PC, डिस्ट्रॉय ऑल ह्यूमंस 2 रीमेक, किंगडम हार्ट्स 4 एंड मैनी अदर टाइटल्स. एंड अमॉन्ग दीज टाइटल्स हमें ड्रैगन्स डॉगमा 2 भी देखने को मिला, जो अगैन एटलीस्ट इस गेम की एग्जिस्टेंस को कन्फर्म करता है. सो बोथ ऑफ दीज लीक्स एक्चुअली काफ़ी मैसिव है एंड एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में प्रीटी मच कन्फर्म करता है कि ड्रैगन्स डॉगमा 2 करंटली इन डेवलपमेंट है. नाउ द रिमेनिंग लीक्स मोर गेम रिलेटेड है, जिसमें हमें गेम के मैकेनिक्स, क्लासेस एंड अदर थिंग्स के बारे में पता चलता है, स्टार्टिंग विद द इंजन इटसेल्फ. So like all the recent Capcom games, Dragon's Dogma 2 Capcom की proprietary game engine Reach for the Moon और commonly known RE engine यूज़ करने वाला है, which is also confirmed by Dust Golem. जैसे कि हम अभी तक ऑलरेडी देख चुके हैं, आर इंजन एक काफ़ी फ्लैक्सीबल एंड पावरफुल टूल है, जो एट फर्स्ट रेजिडेंट इविल 7 के लिए डेवलप किया गया था, बट नाउ ये इंजन कैपकॉम के हर एक न्यू रिलीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है एंड आई एम ग्लैड अबाउट इट. आर इंजन एक वर्क ऑफ आर्ट है, जो वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड एंड एडवांस्ड गेमिंग इंजन्स में से एक है, अलॉन्गसाइड कोनामीज फॉक्स इंजन एंड इट टैक 4. Other than photorealistic graphics thanks to photogrammetry, RE Engine advanced physics simulation, many types of anti-aliasing, lighting and many other features support करता है. And I just love कि how versatile this engine is, जो even Nintendo Switch में रन कर सकता है. And I personally love this engine's aesthetic, जो गेम को एक काफ़ी clean and simple but realistic look देता है. And कैसे ये grounded and fantasy elements को perfectly match करता है, जहाँ nothing really out of place लगता है. The perfect example being Devil May Cry 5. So I can imagine how amazing Dragon's Dogma 2 gonna look like with all of the effects and scenery. But according to the leaks, dev team was facing some issues regarding performance in big open areas of the game due to vegetation and trees and complex spell animations, considering how over the top some of the spells are in Dragon's Dogma. But I'm optimistic and hope कि Capcom one way or another's engine को optimize कर पाए without scaling things back in the game itself. According to the leaks, Dragon's Dogma 2 एक full open world नहीं but more hub based game होने वाला है, which is fine with me if you have explorable and content rich है. While the open world setting Dragon's Dogma का एक big part थी, there is no denying कि वो game की one of the least interesting and underdeveloped things में से एक थी, जो mostly empty था with some occasional fights here and there. And I just hate कि कैसे most of the open world encounters same location पर होते हैं because there is no randomizer and dynamic encounters. Something Dragon's Dogma 2 might be fixing since leaks do mention random encounters based on time and weather. Dragon's Dogma के open world के best elements थे the journey itself.
डिस्पाइट बीइंग प्रीटी मच एम्प्टी, आई कैन डिनाई कि कैसे इस वर्ल्ड में वन प्लेस से अनदर प्लेस जाना एक्चुअली एक बिग एडवेंचर की तरफ फील होता है, स्पेशली इन नाइट टाइम जहाँ हमें गेम की मोस्ट विशियस एनिमीज से फाइट करने का मौका मिलता है। सो आई एम ग्लैड कि हाउ द लीक्स मेंशंस कि दिस थिंग स्टिल गेम का एक बिग पार्ट है, जहाँ हमें थ्रू आउट द जर्नी रैंडम एनकाउंटर्स देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन टाइम एंड वेदर। देयर इज इवन अ कैंपिंग सिस्टम नाउ जो अकॉर्डिंग टू द लीक्स मोस्ट लाइकली काफ़ी सिमिलर होने वाला है मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड के, जहाँ हम अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं एंड चिल विद आवर पॉन, बट मोस्ट लाइकली टू अ लेसर एक्सटेंट कंपेयर टू मॉन्स्टर हंटर। कैरेक्टर क्रिएटर वास्टली इम्प्रूवड है कंपेयर टू द ओरिजिनल, जो ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर क्रिएटर्स में से एक था, विद योर कैरेक्टर्स अपीयरेंस एक्चुअली चेंजिंग गेम प्ले मैकेनिक्स। एंड आई कैन ओनली इमेजिन हाउ अमेजिंग ड्रैगन्स डॉगमा 2 का कैरेक्टर क्रिएटर होने वाला है, स्पेशली फॉर पॉन्स। गेम में ना टोटल 12 क्लासेस हैं, बेसिक, एडवांस एंड सब, एंड आई जस्ट होप कि कैपकॉम इन क्लासेस को ड्रास्टिकली डिफरेंट बना पाए एंड सम ऑफ द ड्रैगन्स डॉगमा ऑनलाइन क्लासेस को गेम में इंप्लीमेंट करें, लाइक द लीक सेड कि कैसे नाउ मिस्टिक नाइट एक मिक्स है बिटवीन द अल्केमिस्ट फ्रॉम ड्रैगन्स डॉगमा ऑनलाइन एंड मिस्टिक नाइट फ्रॉम ड्रैगन्स डॉगमा। कॉम्बैट एंड क्लासेस ड्रैगन्स डॉगमा का बेस्ट पार्ट है एंड आई हैव हाई होप्स कि कैपकॉम एटलीस्ट इस एस्पेक्ट में हमें रिस्पॉन्ड नहीं करने वाले। Just keep the grounded feeling of gameplay from Dragon's Dogma and mix it with Dragon's Dogma Online. Then I think हमारे पास एक perfect mix होगा between grounded and over the top. Something like a mix between Monster Hunter and Devil May Cry. According to the leaks, गेम में ना एक मैकेनिक है जहाँ हम हमारे मेन पॉन को सेक्रीफाइस कर सकते हैं फॉर यूनिक इक्विपमेंट एंड वन सेक्रीफाइस्ड ये पॉन करप्ट हो जाते हैं एंड अरिजिन पर रैंडमली अटैक करते हैं while near the lift. Similar to corrupt pawns in Bitter Black Isles. ये सुनने में काफ़ी कूल कॉन्सेप्ट लगता है, बट आई डोंट थिंक आई एम गोना सैक्रिफाइस माई मेन पॉन फॉर सम इक्विपमेंट। दे आर प्रेशियस टू मी, बट विल सी अबाउट दैट। There are multiple mentions of co-op but no confirmation. I think हम Dragon's Dogma 2 में definitely co-op features देखने वाले हैं। Now ये एक full co-op experience होने वाला है और something like specific multiplayer quests like dungeon similar to Bitter Black Isles, we'll have to find out. एक फुली फंक्शनल को-ऑप फीचर इस गेम की लॉन्गजेविटी पर डेफिनेटली काफ़ी ह्यूज इम्पैक्ट डालने वाला है एंड हु नोज इट माइट जस्ट गेट एज पॉपुलर एज मॉन्स्टर हंटर। सो आई होप कि गेम में एटलीस्ट एक प्रॉपर को-ऑप फीचर हो, इवन इफ वो सम स्पेसिफिक क्वेस्ट और डंजन्स से टाइड हो। एंड फाइनली हमारे पास कुछ टिडबिट्स है रिगार्डिंग स्टोरी। नथिंग टू डी बट सो फर हमें पता है कि गेम की स्टोरी एक कर्स के अराउंड रिजॉल्व है, जहाँ हम अरिजन को गेम की फर्स्ट हाफ में एक मास्क पहने हुए देखेंगे जो किसी कर्स से रिलेटेड है एंड फर्स्ट मेजर टाउन के बाद ये मास्क अरिजन के फेस से रिमूव हो जाएगा। अदर स्टोरी ये मास्क एक गेम प्ले मैकेनिक भी है जिसे प्लेयर्स अपनी मर्जी से रिमूव कर सकते हैं फॉर अल्ट्रा हार्ड डिफिकल्टी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द गेम। रिमूविंग द मास्क गेम वर्ल्ड को ड्रास्टिकली चेंज करेगा, जहाँ सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमीज क्रेडिट्स एंड सेंटार्स अरिजन को रैंडमली एम्बुश करेंगे। From the sound of it, it looks like Dragon's Dogma 2 heavy inspirations ले रहा है from Greek mythology with things like Creates and Centaurs, and I'm all for it because personally मुझे Dragon's Dogma का lore काफ़ी पसंद है and I can only imagine Itsuno-san and team can do with Greek mythology. And these are all the important bits from the leaks. According to the leaker, game को development without much problem काफ़ी smoothly चल रहा है, but after sapping 2077 controversy, Capcom game की release की regarding काफ़ी cautious है, and with such ambitious game वो किसी भी तरह के chances नहीं लेना चाहते हैं। Because of that, we might see Dragon's Dogma 2 release in late 2023 or early 2024, which is what I expected since Dragon's Dogma 2 Capcom के लिए एक काफ़ी big project होने वाला है and might just be the most ambitious game they ever made. प्लस यार इंजन का फर्स्ट गेम होने वाला है विद सच मैसिव स्केल, सो आई कैन सी कि क्यों वो इस गेम को रश ना करने की जगह प्रॉपर्ली डेवलप एंड पॉलिश करना चाहेंगे एंड आई जस्ट से कि लेट देम टेक देयर टाइम। फैंस इस गेम को ऑलरेडी एक डेकेड से वेट कर रहे हैं, सो फ्यू मोर ईयर्स रियली एक बिग डील नहीं है। आई जस्ट होप कि कैपकॉम एटलीस्ट गेम को ड्रैगन्स डॉगमा की 10th एनिवर्सरी ऑन 22 ऑफ मई पर रिवील करेंगे बिकॉज आई थिंक दैट विल बी द मोस्ट लॉजिकल स्टेप, बट विल सी। फॉर माई पर्सनल विश लिस्ट मैं एक एक्चुअली इंटरेस्टिंग इफ नॉट गुड स्टोरी देखना चाहूँगा विद इवन डीपर लो एंड फॉर गेम प्ले जस्ट मेक द क्लासेस डिफरेंट फॉर मैसिव रीप्ले वैल्यू। Dragon's Dogma ऑलरेडी एक हाईली replayable गेम है, so I can only imagine how much replayability this game will have. Also, multiple Bitter Black Isles scale dungeons. Bitter Black Isles Dragon's Dogma के one of the best parts में से एक है and I just hope कि Dragon's Dogma 2 में हमें उस स्केल पर multiple dungeons देखने को मिलेंगे with unique loot जो actual gameplay mechanics को affect करे, आ la the class bands from the original. These are the only things I can think of right now, but what about you guys? Any thoughts and wish list for Dragon's Dogma 2? Comment down below. Because I would love to read them and let's just hope कि Capcom finally इस year Dragon's Dogma 2 को reveal करे because right now ये game मेरा most anticipated है and it's not even officially announced yet.
So fingers crossed. And this is all for this video. Thanks for watching and have an absolutely banging day. Peace.